శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే
भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य యజమానస్య అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. వసుదేవ సుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் என்று அந்த கிருஷ்ண பரமாத்மாவை மனதிலே நினைத்து கொண்டு வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, இன்று வைகாசி மாதம் 9வது நாள் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, மகம் நட்சத்திரம் அஷ்டமியுடன் கூடிய இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, இதோ திருமலை அப்பனுடைய பாரியைகளான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடன் எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானையும் சேவிக்கலாம். முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்கள் முடிந்தது. அதைத் தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகிறது. சேவிக்கலாம். ஸ்ரீபூமிகாம் தமரவிந்ததலாயதாக்ஷம் பிராணப்ரியா பரமபங்கஜ கம்போகண்டம் ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य पवनीज मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समधीरयन्तम् श्रीशास्त्रधारमिखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं. श्रीमते विकनसे नमः. भृगुमरीच अत्रिकस्य मेभ्यो नमः. शुक्लाम्रधरं विष्णुं सिरिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वृतवक्त्राद्या पारिषत्या परश्वरं विघ्नं निघ्नन्ति सदनं विश्वक्सेनं तमाश्रये. श्रोतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैहानसं वन्दे भगवत्कर्मसूचकम्. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीत भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणनायम्या.
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तञ्जलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्मकृत्यन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये ओम धारासुतप्तशिनमानशेषु सरत्तरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुजरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवदमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभदमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यामेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पाशावितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा मञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः गिरवासनम् वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि हर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः जातस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कटकृसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पप्रदवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत् आग्नेयस्माद्जामहे त्वा विश्वेशदात्मं महितो न शम्भो वैराजन्ते हतन्निधत्तां प्रयिष्याम देशो विबधानामनादर्यामे सस्तां दनिदां दधात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपदे जगासमेत श्री विश्वक्सेनस्य गिरमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणा विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्य च कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाद्धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाद्धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाद्धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि भस्मसे इन्द्रस्य युत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादनं तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्महव्येर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ते अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सिदञ्जीवेम सृतस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्ते कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षुषे यो वश्यमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वुशतीर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथ
आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने वितनमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहि उभाभ्यां देवसविदः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहि वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनमो वेदपृष्ठाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयग्स्याममतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्निये मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सतिदं मातरिश्वन पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहि इन्द्रस्सु नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहि गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रात्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यनन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यदयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधितर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्रिघ्याचमनीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஏ வாசுதேவாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாசனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். இந்த வேளையிலே கண்ணனுடைய பிறப்பினை எண்ணி பார்க்கிறோம். எதற்கென்றால் இன்று அஷ்டமி திதி ஆகையால் அவனை சற்று நினைவு கூறலாம். சிசுபாலனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கவே கண்ணன் பிறந்தான் என்றும் நமக்கு தெரிகிறது. விதர்ப நாட்டு அரசன் பீஷ்மகன் இவனுக்கு மகாலட்சுமியே பெண்ணாக பிறந்திருந்தாள். ருக்மிணி என்று பெயர் வைத்தனர். அரண்மனைக்கு வரும் முனிவர்கள் மூலம் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் அவதாரம் பற்றியும் லீலைகளை பற்றியும் கேட்டு பிறகு அவனையே தன்னுடைய கணவனாக செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தாள். இவளுக்கு 5 பேர் சகோதரர்கள். மூத்தவன் ருக்மி, கம்சனின் நண்பன். ஸ்ரீகிருஷ்ணனே கம்சனை அழித்தவன் என்பதால் கிருஷ்ணனின் மீது வெறுப்பு. தன்னுடைய சகோதரியை மணம் செய்து கொள்வதா என்று மறுக்கிறான். மாறாக தன் நண்பன் சேதி நாட்டு அரசனான சிசுபாலனுக்கே தன்னுடைய சகோதரியை மணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்தான். ஆனால் ருக்மிணி இடம் தேடி வந்த கிருஷ்ணன் தன்னுடைய ரதத்தில்
ஏற்றி சென்று அவளை திருமணம் செய்து கொண்டார். அப்படி அங்கே கிருஷ்ணனாகவும் திருவேங்கடமலையில் திருவேங்கடமுடையானாகவும் எழுந்தருளியிருக்கும் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். சேவிக்கலாம் அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை. அதாவது நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே தேவர்களை கூட ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். செவிப்போம் அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். உறுப்பிணி நங்கையை தேரேற்றிக் கொண்டு விருப்புற்று அங்கேக விரைந்து எதிர் வந்து செருக்குற்றான் வீரம் சிதைய தலையை சிதைத்திட்டான் வன்மையை பாடிப்பற என்று பெரியாழ்வார் திருமொழியிலே கூறப்படுகிறது. அப்படி அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு இதோ அடுத்ததாக ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த ரக்ஷா பூஜை என்பது நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து செய்யப்படும் கைங்கரியம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. श्री भूनिवास समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि प्रतिसरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हिडानविबधा विराजन् तम्मय दोषा यस्याननाग्निविबधानि वदन्ति। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति भूषा असुरो दधातन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधदाग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भो मुचामाङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जतार्क्ष्यम् प्रियातमानिश्चरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभगं शुभाम्। கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். சிசுபாலன் அடியுண்ட வேங்கை போன்று சீறினானாம். ஸ்ரீகிருஷ்ணனை வழிமறித்தான். பலராமனும் கிருஷ்ணனும் சிசுபாலனையும் அவன் நண்பர்களையும் தோற்கடித்து ஓடச் செய்தனர். கிருஷ்ணன் மேல் இருந்த விரோத மனப்பான்மை சிசுபாலனிடம் வளர்ந்து கொண்டே வந்தது. தர்மபுத்திரர் ராஜசூய யாகம் செய்த பொழுது கிருஷ்ணனுக்கு முதல் மரியாதை என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீகிருஷ்ணனே பகவான், யக்ஞஸ்வரூபி, மந்திரஸ்வரூபி, சர்வ லோகேஸ்வரன், சர்வேஸ்வரன் என்று எல்லோரும் புகழ்ந்தனர். ஆனால் சிசுபாலன் இவை அனைத்தையும் எதிர்த்தான். சிசுபாலன் முன் பிறவியில் மகாவிஷ்ணுவின் தீவிர பக்தனாக துவாரபாலகனாக கைங்கரியம் செய்தவன். கிருஷ்ணன் யாதவ குலத்தை சேர்ந்தவன். இவன் பூஜைக்கு தகுந்தவன் அல்லன். கிருஷ்ணன் திருடன் என்று இழிவாக பேசினான் சிசுபாலன். அப்படி இந்த கடும் சொற்களை நிந்தனைகளை காது கொடுத்து கேட்க சகிக்காமல் பொதுமக்கள் வெளியேறிவிட்டார்கள். பாண்டவர்கள் சிசுபாலனை எதிர்க்க ஆயுதம் எடுத்த பொழுது ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவர்களை சாந்தப்படுத்தினானாம். சிசுபாலனோ இழிவான சொற்களால் ஸ்ரீகிருஷ்ணனை ஏசிக்கொண்டே இருந்தான். பெரியோர்கள் காதுகளை மூடிக்கொண்டனர். சிசுபாலன் கிருஷ்ணனின் யுத்தம் நடைபெற்றது. முடிவில் சிசுபாலனை அழிக்கிறார். இதை நம்மாழ்வார் தன் பாசுரத்திலே எப்படி விவரித்திருக்கிறார் திருவாய்மொழியில் என்று பார்க்கும் பொழுது,
கேட்பார்கள் கேசவன் கீர்த்தி அல்லால், மற்றும் கேட்பாரோ கேட்பார் செவிசொடு கீழ்மை வசவுகளையே வையும். கேட்பால் பழம் பகைவன் சிசுபாலன் திருவடி, தாட்பால் அடைந்த தன்மை அறிவாரை அறிந்ததுமே என்று. ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன்னுடைய சக்கராயுதத்தால் சிசுபாலன் தலையை அறுத்தார். சிசுபாலனிடமிருந்து ஒளி கிளம்பியது. அது ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய திருவடிகளை வந்து சேர்ந்தது. சிசுபாலன் முன்பிறவியிலேயே மகாவிஷ்ணுவின் துவாரபாலகனாக கைங்கரியம் செய்தவன். சாபம் காரணமாக பகவானை எதிர்க்க நேர்ந்தது. சதா சர்வ காலமும் பகவன் நாம ஸ்மரணையுடன் வாழ்ந்தவன் சிசுபாலன். கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து க்ஷணமும் பிரிந்ததில்லை. கிருஷ்ணனையே நினைத்திருந்ததால் அவனுக்கு முதல் முக்தி கிடைத்தது. பகைவனுக்கு கூட அருளும் அந்த கிருஷ்ணபிரானான திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்யப்பட்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் எம்பெருமானுக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. வேங்கடவனே கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவித்து கொண்டு அடுத்ததாக பிராட்டிமார்கள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடிக்க உள்ளார். இந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் திரேதா யுகத்திலே, அதாவது துவாபர யுகத்திலே ருக்மிணியும் சத்யபாமையும் பிராட்டிகளாக நாம் நினைத்து கொண்டு இப்பொழுது கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு செய்தது போல் அந்த பிராட்டிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் என்று மனதார நினைத்து கொண்டு மானசீகமாக சேவிக்கலாம். பிராட்டிமார்கள் இருவரும் கூட எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக இருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு கூட ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதாவது ரக்ஷாபந்தனம் என்பது மனதை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு தேகத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு பகவானின் மீது சிரத்தையாக பக்தியை செலுத்தி கைங்கரியங்கள் செய்வது. அப்பொழுதுதான் பகவான் நமக்கு அருளி செய்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஆகவே பக்திகளிலே நவவித பக்தி, அதிலே தாசிய பக்தி என்பது ஆஞ்சநேயருக்கு பொருந்தும். நமக்கெல்லாம் கைங்கரிய பக்தி, அதாவது பெருமாளுக்கும் சரி தாயார்களுக்கும் சரி அந்த கைங்கரியங்கள் செய்துவிட்டால் ஏதோ நம்மாலான கைங்கரியம் செய்தோம், பகவான் நமக்கு அருளி செய்வார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் செய்யப்படும் கைங்கரியமே இந்த சரணாகதி தத்துவம். ஆகவே பக்தர்களே, இதோ திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷையை அணிவித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்து ருக்மிணி பூமி பிராட்டிக்கும் இந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு முடித்து அடுத்ததாக பூமி பிராட்டிக்கும் அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். சேவிக்கலாம். வேங்கடவனே கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும் சேவித்து கொள்ளலாம். இதை பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அடுத்து அந்த பிராட்டிமார்கள் இருவருக்கும் முடித்து கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமானை சேவித்து கொண்டு தனது கரத்திலேயும் ரக்ஷை அணிந்து கொள்ள அதன் பிறகு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை ஆரம்பிக்க உள்ளார். வேங்கடவனே கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு ஆத்ம ரக்ஷைக்கான தன்னுடைய கரத்திலே ரக்ஷையை அணிந்து கொள்ளுகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருவேங்கடமுடையானுக்கு வைகான சாகம சாஸ்திர முறைப்படி ஆரம்பமாகும் அனைத்து கைங்கரியங்களும் கூட திருமலையிலே தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை. அடுத்ததாக அக்னி ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம் அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.
देवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि औपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये ॐ ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशो शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्रशुद्धो न आगहि शुद्धशुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्तिशोम्यः इंद्रशुद्धो हिनो अर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुते शुद्धो वृत्राणि जिग्दशे शुद्धो वाजं श्रासते मयि देवात्रिवणमाजिदन्तां मय्यासेरस्तमयि देवभूतिः देव्याहोता रावणजन्तपूर्वेरिष्टास्यावसवीराः मह्यं जिदन्त मम यान हव्याकोति सत्यावनसो मे अस्तु ये नोमानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजरामि देवी षडर्वीर्न कृणोत विश्वे देवास यहवीर्यध्वं महास्महि प्रजगामादनोभिर्मादधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः जन्तमसो इत्यनिश्यते अग्निमश्वत्था दधे हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रदीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नो घृतपृषस्वादरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयदायक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषोजुषाणो घृतप्रदीको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं विदेवपुत्रमिभिरक्षदादिवम् अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषे मदसुरुचो वेन आवः समुद्रया पुमास्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाषकं सोमो वीरङ्करमन्यं ददाते साधन्यं विदित्यकं च भेगं च श्रवणं योदराच तस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ॐ सबरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो जिग्नये स्थो वायुभूते स्थो विष्णोर्मनसा भूते स्थो जिग्नस्य पावने स्थः परशरस पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसमितप्रसवपनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्रे पवो अग्रे गुवोग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिन्धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमव्रणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणीष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सकुं साधयन् पुनः इदं वदन्ति कृतपुष्टावदागस्सहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतेः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतयेष्टनोमामि ब्रह्मणेष्टनोमामि इन्द्राकृष्टनोमामि अग्नयेष्टनोमामि सोमाकृष्टनोमामि अग्नयेष्टनोमामि सोमाकृष्टनोमामि अग्निशोमाभ्यां नोमामि प्रजापतयेष्टनोमामि ब्रह्मणेष्टनोमामि इन्द्रायरिष्टनोमामि वसुभ्योरिष्टनोमामि मरुद्भ्योरिष्टनोमामि रुद्रेभ्योरिष्टनोमामि आपावपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेरिष्टनोमामि बृहस्पतयेरिष्टनोमामि मित्रागिरिष्टनोमामि वरुणागिरिष्टनोमामि आदित्येभ्योरिष्टनोमामि अश्विभ्यारिष्टनोमामि पूष्णेरिष्टनोमामि कक्षागिरिष्टनोमामि कक्षदेवत सोमागिरिष्टनोमामि औपासनयज्ञागिरिष्टनोमामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनोमामि सर्वदेवेभ्योरिष्टनोमामि आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतरसे समिति स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अंतरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वाजपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चुरुभिः
సంత్వేకాచ శతంచ సహస్రంచ అయుతంచ నియుతంచ ప్రయుతంచ అర్బుదంచ న్యర్బుదంచ సముద్రస్య మధ్యంచ అంతస్య పరార్థస్య మామే అగ్నిష్టగాధే నమః సంత్ ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః జరాప్రభవే నమః విసత్మనే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువా షష్ఠీశతసహస్రాణ్యగతమక్షయమర్పదమానయ అయంత యద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్తవర్తస్వదేద్దవర్తగిదాస్మాన్ ప్రజగా పశవిర్బ్రహ్మవచ్చసేనాన్నాద్యేన సమేధ యస్మాః వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహ అగ్నయే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహ ప్రజాపతయే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపవుపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్విభ్యాగు స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహ అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంకర్మణి ఓపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్రాక్షరక్రియా దోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాదశత్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యదో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేవనం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతిగతో వ్రతాని పుష్పషే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివేవ చక్షురాతరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపణ్యమోజాగ్రవాగం సస్యమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిత ప్రాసామీః పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు
వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడేమూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు నానా పురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే ఆప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణేనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంటి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోవతే సంయమనే రక్షోవతే సింధువతే గంధవత్యలకావతే యశోవదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలయతే లవణేక్షుసురాసర్పితధిక్షేరసుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్షకుచక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వే పదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతి కిం పురుషహారీలావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకటమనక కుర్వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశైరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యః జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేశ రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాగలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ముత్తీర్య తినై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వసహస్రావధానే ఏకైకతలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాశిపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృతాగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతమున్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘనోమనీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య
అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశార్ంగ కౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతే స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రబలాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభే శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వారాయ ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవస్యమన ఆప్నవానవైదలమంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగోః సంకల్పదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీనామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యప ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రగారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారపదీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీనామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేతసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యः సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ஏடுகொண்டலவாட வெங்கடரமணா கோவிந்த கோவிந்த. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகாசங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி முறையே பூஜை செய்கிறார். அந்த மாங்கல்யங்களை இப்பொழுது நாம் சேவித்துக்கொண்டு பூஜையை பார்க்கலாம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதன்பின் அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அக்ஷதை புஷ்பங்களால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் தினந்தோறும் இந்த வேளையில் சுமார் 12 மணியிலிருந்து 1 மணி வரை நடைபெறுகிறது. அந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் பார்க்கும் பக்தர்களுக்கும் மற்றும் எதிரிலே அதாவது நேரடியிலே தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்துக் கொள்ளலாம். அஷ்டமி ஆதலால் கிருஷ்ணனையே நினைவு கூற தோன்றுகிறது. வேண்ணையை அளந்ததால் உண்டான முடை நாற்றம், விளையாடுவதால் படிந்த புழுதி, இவற்றை கொண்ட உடம்புடன் இன்றிரவு படுக்கையில் படுத்து தினவினால் உடம்பை தேய்த்து கொண்டிருக்கும்படியாக நீ இருப்பதற்கு நிச்சயமாக நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன். நாற்றமும் பொழுதியும் நீங்கும்படியாக தேய்த்து குளிப்பதற்காக எண்ணெயும் புளிப்பழத்தையும்
வைத்துக்கொண்டு இங்கே நெடுநேரமாக உனக்காக காத்திருக்கிறேன். தன் முயற்சியால் ஒருவரும் அடைய முடியாத பிரானே, நாராயணனே, நீராடுவதற்காக இங்கு வந்து சேர வேண்டுகிறேன் என்று கூறுகிறாளாம் யசோதை. எப்படி என்றால், வெண்ணெய் அளந்த நுங்கும் விளையாடு புழுதியும் கொண்டு திண்ணென இவ்விராவுன்னை தேய்த்து கிடக்க நானொட்டேன். எண்ணெய் புளிப்பழங்கொண்டு இங்கெத்தனை போதும் இருந்தேன். தன்னிலறிய நன்னலறிய பிரியானே, நாரணா நீராடவா என்று. கன்றுகளோடு செவியில் கட்டெரும்பு பிடித்திட்டால் தென்றி கெடுமாகில் வெண்ணெய் திரட்டி விழுங்கும் வெண்ணெய் திருக்கும் மாகாண்பான். நின்ற மராமரம் சாய்த்தாய், நீ பிறந்தது திருவோணம். இன்று நீ நீராட வேண்டும் எம்பிரான், ஓடாதே வாராய் என்கிறாள். பேய்ச்சி முலையுண்ண கண்டு பின்னையும் நில்லாது என் நெஞ்சம். ஆய்ச்சியர் எல்லோரும் கூடி அழைக்கவும் நான் முலை தந்தேன். காய்ச்சின நீரோடு நெல்லி கடாரத்தில் பூரித்து வைத்தேன். வாய்த்த புகழ்மணி வண்ணா, மஞ்சனமாட நீ வாராய் என்று அந்த இளம்பிள்ளையான கண்ணனை யசோதை இவ்வாறு பாடுகிறாள். அவனோ அதாவது நீராடுவதற்கு வரமாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிறான். அப்படிப்பட்ட பிள்ளையை கொஞ்சி அந்த நீராடச் செய்கிறாள். பசுவின் கன்றுகள் மிரண்டு ஓடும்படியாக அவற்றின் காதில் கட்டெரும்பை பிடித்து போட்டுவிட்டாய் என்றால் அந்த கன்றுகள் நாலாபுறமும் ஓடிப்போகும். அவ்வாறு ஓடிப்போய்விட்டால் நீ எப்படி வெண்ணெயை திரட்டி விழுகின்றாய் என்று பார்க்கின்றேன். ராமனாக அவதரித்த பொழுது வரிசையாக நின்ற 7 மரங்களை ஒரே அம்பினால் துளைத்தவனே, இன்று நீ அவதரித்த திருவோண நட்சத்திரமாகும். எனவே இன்று நீ நீராட வேண்டும் எம்பிரானே. என்னை வஞ்சித்து ஓடாமல் நீராடுவதற்கு வரவேண்டுகிறேன் என்று வேண்டுகிறாள். உன்னை கொல்ல வந்த பூத்தனையின் நஞ்சு தடவிய முலைப்பால் உண்டு அவளது உயிரை நீ பறித்ததை கண்ட பின்பும் இறைச்சிகள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இதனை கண்ட பின்பும் நீ இவனுக்கு முலை கொடுக்க பார்க்கின்றாயே என்று பயத்தினால் என்னை அழைத்தாலும் உன் மீதுள்ள அன்பினால் என் மனம் தாங்காமல் நீ பால் உண்பதற்காக எனது முலையை கொடுத்தேன். நெல்லி இலையைப் போல காய்ச்சின வெந்நீரை தாழியில் நிறைத்து வைத்திருக்கிறேன். பெரும் புகழையும் நீலமணி போன்ற நிறத்தையும் உடைய கண்ணபிரானே, நீராட நீ வரவேண்டும் என்கிறாள். அதாவது கஞ்சன் புணர்ப்பினில் வந்த கடிய சுடமுதைத்து வஞ்சகப் பேய்மகள் துஞ்ச வாய்முலை வைத்த பிரானே, மஞ்சளும் செங்கழு நீரின் வாசிகையும் நாறு சாந்தும் அஞ்சனமும் கொண்டு வைத்தேன். அழகனே நீராடவாய். அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி அக்காரம் பாலில் கலந்து சொப்பட நான் சுட்டு வைத்தேன். தின்னல் உறுதியேல் நம்பி செப்பிளமென் முலையார்கள் சிறுபுறம் பேசி சிரிப்பீர். சொப்பட நீராட வேண்டும் சோத்தம்பிரான் இங்கே வாராய். எண்ணெய்க்கு குடத்தை உருட்டி இளம்பிள்ளை கிள்ளி எழுப்பி கண்ணை புரட்டி விழித்து கழகண்டு செய்யும் பிரானே, உண்ண கனிகள் தருவேன். ஒலிகட லோத நீர் போலே வண்ணமழகிய நம்பி மஞ்சனமாட நீ வாராய் என்று எவ்வளவோ அழகாக அந்த பாசுரங்களை பாடி அழைக்கிறாள் அந்த கண்ணபிரானை. அவருக்கோ நீராட வேண்டும் என்றால் பயம். அதுவும் வெண்ணெயெல்லாம் பூசி அந்த குளியலில் அதாவது நீராடலில் மிகவும் அழுக்கெல்லாம் போய்விடுமோ என்ற ஒரு பயம். அப்படியாக அந்த குழந்தை வராமல் மாறாம் செய்கிறான், அதாவது மொண்டி செய்கிறான். கம்சனுடைய அணையினால் உன்னை கொல்லக்கூடிய சகடத்தின் உருவிலே வந்த அசுரனை உன்னுடைய திருவடிகளால் உதைத்து அந்த சகடத்தை முறித்தவனும் வஞ்சனையான எண்ணத்துடன் வந்த பூத்தனையானவள் முடியும்படி அவள் முலையில் வாயை வைத்து பாலை உண்ட பிரானே, நீ நீராடுவதற்கு வந்து மஞ்சள் காப்பு நீராடிய பிறகு அணிய செங்கழுநீர் மாலை
பூசிக்கொள்ள நறுமணமுள்ள சந்தனம் இவைகளை வைக்கிறேன் என்கிறாள். ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదాన్వసృజ్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే సాజీవ శరదశతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజా నమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృజ్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. అగ్నిరేర ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజాముంచనమృత్యభాషాత్ తదయగుం రాజావరణోనమన్యదాం యథేజక్ స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణశ్రుతి హవమత్యాజమృడయా త్వామవస్యురాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమానసదాశాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడవానో వర్ణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా త్వన్నో అగ్నివర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోమయా సతీష్ఠాః ఇతిష్టో వంఠితమస్సోషుడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగంసి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే వమో భవోతి నేతిష్టో అస్యావశతో వ్యష్ట అవయక్ష్మణావరణగం మృడానో వీహిమృడేకం సహవోనగేతి స్వాహా తమగ్నే అయాస్య సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహిజేయానో దేహి భేషడ్గ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా
अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये ओम अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेणोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वामुतत्वया वयं धारावुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि ओपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा निदधेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य गित्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्राधो विपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्चकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा यदस्य कर्मणोत्यरीरजं यद्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्च स्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकृष्टिष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनः आर्जातवेदा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात्रेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अश्विनाय वञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरिष्टेभ्य स्वाहा भेषडन्दृष्टै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितशतेजोषितेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि
प्राणान् मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिध सप्तदिक्पा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टं कृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जेर्णं वेदर्जेर्णं ज्योर्जेर्णं पृथिवीजेर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिरहविषा कृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधीवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितर्पिता महाप्रपिता महाश्चाक्षय्यमस्तुरुप्यन्ताम् अदितेन्ममकृस्ताः अनुमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सतसिद्धं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् अक्षितमक्षित्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरिष्ठागह्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्बाजीक्वरदवत्र रमेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषधयस्थतिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उशतीर्ममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्मी भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भराजो दधातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृतमया देव परिपूर्णस्तने प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகூத்தி, அஞ்சனமிடுதலை சேவித்து கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம்.
வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னதேர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழியினான் நாளை வதுவை மணமென்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசு உடை பந்தர்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழியினான் என்று. இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாமெல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடி உடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்ட கனா கண்டேன் தோழினான் என்ற அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம். திருமலை அப்பனுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. முதலில் பெருமாளுக்கு அணிவித்த மாலை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்கப்படுகிறது. சேவிக்கலாம் மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை. திருமலை அப்பனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ பகவானுக்கு அலங்காரம் செய்த மாலை முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை அணிவித்து அவரை சேவித்து கொண்டு திரும்பவும் மலையப்ப சுவாமிக்கே கொண்டு சாத்துகிறார் அந்த மாலையை. மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா ஆபத் பாந்தவா அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று மலையப்ப சுவாமிக்கு அணிவித்த மாலையை திரும்பவும் கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். அவள் ஏற்கனவே மாலைகளை தொடுத்து, அதாவது புஷ்பங்களை தொடுத்து மாலையாக்கி தன் கழுத்தில் இட்டுக்கொண்டு பகவானுக்கு அனுப்புகிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ அந்த பூமி பிராட்டி அனுப்பிய மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுக்கு சாத்துகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்படி 3 முறை அந்த மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு அதன் பிறகு பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் கூட பகவானின் பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். ஏழுமலையானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ பக்தர்கள் அந்த கோவிந்த நாமத்தை கூறிக்கொண்டு மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே செவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவித்துக் கொள்ளலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா தராரமண கோவிந்தா வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ